my spiritual beings. Welcome to today's pick a pile reading. In this video, we'll dive into the past, present, and future of your love life. Trust your intuition and take a deep breath and let your energy guide you towards the pile that calls you out. So we have pile 1, which is the amethyst. Second one, pile 2, that is the green aventurine, and the third pile is the rose quartz. Pick the one pile that you feel the most aligned with, or the one that is calling you in terms of your inner voice. For those who have chosen pile 1, let me quickly check what exactly is the past, what exactly is there that you guys have been dealing with in your love life, and how it has been impacted you. Okay, I've got one card. Like overall or in general. Let me check the past real quick. Okay, so I have 3 cards here, one of which is 8 of Wands. Kahin na kahin I'm getting that the 8 of Wands energy is giving me fluctuation, not consistency. Things have been up and down, and not really the way that you want it to be. मतलब sometimes it was, sometimes it wasn't. कभी-कभी ऐसे सही जाते ऐसा लगता था now it's perfect. Then वो stability फिर खो जाती थी फिर से. कहीं ना कहीं fluctuation, not consistent, lack of stability, and I can see things मतलब बहुत ज़्यादा fast ही process रहा. Maybe you guys were in a relationship, you guys got close really quickly, and then बहुत ही जल्दी वो उस honeymoon phase का भी kind of end हो गया basically. That is what I can see or I can get from this 8 of Wands energy about the past. Okay, the 6 of Pentacles. Again, as I said that it was not all bad. मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा all bad kind of energy रही है इस past में, but हाँ, there was 2 sides of it. One was which is beautiful, one which was the 6th, the Venus energy, the love, it was था भी तो अगर stability नहीं थी, that is one point. But even if it was there, like the love was there, the relationship was there, it was like at the highest level of emotions, love, पीक कर रहा था वहाँ पे. एंड देन अगेन फिर वापस से बिल्कुल ज़ीरो. अगर है तो बिल्कुल ऊपर है एफर्ट्स, और नहीं है तो बिल्कुल बिलो है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इवन इफ यू फील लाइक कि ऐसा लगता था एट टाइम्स कि कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो बिल्कुल ही 2 एंड पे रहा है. और पास्ट में मुझे लगता है कि मे बी डिसीजन मेकिंग रही है, मे बी द कमिटमेंट वॉज नॉट देयर, मे बी द ओनली इशू वॉज कि फ्यूचर होगा या नहीं होगा. पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी जिस करंट रिलेशनशिप में आप हो उसका पास्ट ये है कि, या जो भी एनर्जीज चल रही थी उसमें यही था कि कंसिस्टेंट नहीं है. और कंसिस्टेंसी के साथ कमिटमेंट क्लोजली जुड़ा हुआ है कि अगर कमिटमेंट का फियर है, कमिटमेंट का इवन 1% भी डाउट है, तो वो सबसे पहले जाके कंसिस्टेंसी पे आके अटकता है कि भाई जब फ्यूचर ही नहीं है तो फिर कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपको एक कंसिस्टेंट टर्म्स ऑफ श्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए, वो नहीं मिला. तो दैट इज about for the past. Let's quickly check what is happening in the present from the different deck. What exactly is happening for the pile number 1? कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, what is happening. Okay, यहाँ पे क्या, okay, all right. So the one that I got here is Queen of Swords, which is kind of reversed. ठीक है, तो इसकी एनर्जीज ओवरऑल मेरे को अभी फॉर नाउ प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि the girl, the women, the feminine energy in this connection has kind of is कि थक गई है, has fed up with the the nature of the relationship, the is want to get up, take a stand, but still is unable to do so. So this reversed can be a sign or can be a message that it's high time, you need to take your stand, you need to work, like
अपनी वर्थ समझने का टाइम आ चुका है बेसिकली. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वट एवर इज हैपनिंग टू यू इज नॉट वट यू डिजर्व. You deserve much more better, and now is the right time to take the stand. Now is the right time to, even if you are a guy, maybe it's just calling out that you need to, you know, get that kind of like a confidence, or in your own self, in your own self-worth, and you deserve everything that for now feels like, that you don't deserve it, that is out of your league, or maybe you're feeling like it's मतलब basically जो भी हो रहा है उसको normalize आपने कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं realization है भी कि normalize कर नहीं करना है, but still you have normalized and you're not taking any stand or any strong action towards it. Let's check the other cards. Okay, so I got Queen of Cups. Again Queen energy है यहाँ पे, which again gives me out that अभी तक मतलब again feminine energy है बहुत ज़्यादा, तो maybe the female in the connection, in this connection, seems to be very caring and nurturing, and वो caring और nurturing nature की वजह से she is being avoidant in terms of her own need, her own worth. That kind of makes it difficult for the energies to follow through. ठीक है, मतलब एक फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा केयर दे रही है, बट शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट शी डिजर्व्स द सेम केयर, नर्चरिंग एंड warmth which she is not getting at this point. So this realization is there, but it's still in the process. But realization है, action नहीं, awareness है, but वो एक इनर वॉइस की लोअर वॉल्यूम पे सेट हुई हुई वो एक रियलाइजेशन है जो सुनाई दे रही है फिर भी अवॉइड करी जा रही है. बट येस, और ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो at points I can see you guys feel a little disappointed, disattached, more like disconnected. Even at some points you feel that maybe कहीं ना कहीं अब present की situation में maybe ज़्यादा आने लग गया है कि maybe he's not the one, maybe this person is not really aligned, और ऐसा लग रहा है कि it's not a surety thing, but yes, you are unsure about this whole scenario, because kahin na kahin you're even questioning ki is it even worth taking the stand, is it even worth being in this relationship and putting in the efforts and all that. तो कहीं ना कहीं overall energies अगर मैं देखूँ तो still in the question mode, maybe mode, as I said कि realization है but action नहीं है, तो कहीं ना कहीं confusion है, और I can see detachment भी एक level तक है because of the disappointment, not because that you don't feel for them, but because of the disappointment I can sense the detachment also here. Okay, let's quickly check the future, what's coming next. I'll pick out 2 cards from both the deck and I'll see what is going to happen next in this connection. What is going to happen next in their connection? Going to happen next? What's coming next in love life? Not like really related to this connection maybe, but हाँ overall I'm forgetting कि singles भी देख सकते हैं, singles के लिए भी ये reading है, तो it should relate both of them. So yes, for those who are in a relationship, for those who are in a separation, for those who are single, what is going to come next? Let's check. Okay, the Fool energy. Okay, the 3 of Swords. Okay, as I said, I think the future energy is somewhat based on the current energy that is going on right now, and I think this Fool and this 3 of Swords gives me the idea that you are very very hurt, and you
are at that point where you feel like that it's not worth it, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से एनर्जी लगाने का एनर्जी नहीं है, दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में, और इवन द वन दैट यू आर ऑलरेडी इन। तो कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए यू आर स्कैर्ड, मे बी इसीलिए यू आर सीकिंग कि शायद पहले की जो कनेक्शंस है उसमें ही कुछ हो जाए, कुछ एक्सेस के साथ कुछ हो जाए वापस से, बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी, यू फील वेरी लो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू कनेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन। एंड तो इस एनर्जी का कहीं ना कहीं फ्यूचर में डायरेक्शन ये है दैट यू हैव टू ब्रेक दिस थिंग, यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ कि स्टार्ट करने का एनर्जी नहीं है तो एनर्जी गेन करो, बिकॉज this is not how it works. Agar if you feel like that the person, the energy, the situation is not serving you the best, तो डर के और नए से डर के, चेंज से डर के, it's not a wise thing to stay in the same situation. ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरे को एनर्जी आ रही है कि इस एनर्जी मतलब फ्यूचर में इट्स नॉट लाइक हीलिंग नहीं है फ्यूचर में, आप मूव ऑन या मूविंग टू अ बेटर सिचुएशन, बेटर रिलेशनशिप नहीं है, इट्स देयर, बट इट requires good ton of healing, good ton of new things, new efforts, new experiences, new learnings, new wisdom from your end. So from the coming future, there will be a lot of learning, lot of healing, and that would be intentional. I don't see that it's going to be an unintentional कि यूनिवर्स ही आपको लेसन दे रहा है, nothing like you are, ऐसा नहीं है, but everything is like you are asking for the lesson, you are asking for growth. So that which is a good thing, that you are accepting, you are in awareness, and you want to grow, you want to heal, and you want to come out of this whole helpless kind of energy, the way of that you're feeling right now, you want to come out of that energy. So this is kind of like a positive thing in terms of generally love भी, मतलब because love it's related to love life. तो yes, जो पास्ट के हर्ट्स हैं उनसे हील होना चाह रहे हो, और एक्शंस भी दिख रहे हैं मेरे को, although it's not going to be easy, I cannot say it's going to be easy, it's going to be difficult, there would be time that you would want to give up, but I can see you getting up again and moving forward in the future. So yes, healing is there in future. About the question about the other two cards, I think yes, I think following, like after this phase is going to start, which is that after your complete healing, after you realizing your self-worth, after you getting into the point that just like, this is what I want, being sure, being clear about your energies, being sure and being clear about what you exactly want in a relationship, and kind of like you would manifest that through the energies that you are putting in efforts into, in terms of healing, in terms of manifestation, अपने आप को clarity देके, अपने mind को clarity देके, और kind of conditioning करके throughout, you would manifest this kind of love, the same person, or maybe the person would मतलब जो है ऑलरेडी वो भी मे बी चेंज हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि वो चेंज नहीं होगा, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी द करंट रिलेशनशिप मे बी इवॉल्विंग, because I think it's all your self reflection, everything that is happening in your connection is a reflection of your own energies. तो हो सकता है कि नया पर्सन भी आ जाए, हो सकता है कि द currently that you are working with this whole पर्सन, उसमें भी, उस रिलेशनशिप में भी, उस कनेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए फ्यूचर में, बट only thing that is is going to stay constant is until unless you heal yourself, until unless you work around your energies, it's going to reflect the same thing. Okay, so healing बहुत important है, और अपनी रिफ्लेक्शन, अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनसिक्योर, इफ यू आर if you're yourself not understanding your worth, if you are not understanding what you deserve, and you're just giving, you're just chasing, how will you be able to make the other person understand that you deserve it, क्योंकि आप खुद तो बिलीव नहीं कर रहे हो. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ होल process that is coming in the future, you accepting, you taking action, you healing, and then this whole healing is going to reflect in your relationships, in your even connections, friendships, and other relationships as well, not just limited to the love relationship. But yes, I think you sure do have a good potential in terms of healing yourself and kind of manifesting the life, the love life, the energies that you want, the desired
love relationship that you want. So yeah. Coming to the next part, that is the green aventurine one. Let me check what do you guys have in past, like क्या चल रहा था आपके कनेक्शन में, ओवरऑल कैसे उसने इम्पैक्ट किया, करंट एनर्जीज में क्या उसका योगदान था. लेट्स चेक दैट. लेट्स चेक how it has been there in past in your love relationships or general. Okay, मतलब कुछ एनर्जीज से कुछ आइडिया लगता है कि how it has been. Okay, all right. So first card which we can see here is the Fool card, which kind of gives me the idea that it started with something like the connection in your past may have been like that, or patterns hai aise, but it overall kind of also gives me the energy that the past relationship has started as of kind of like no commitment, go with the flow kind of energies के साथ start हुए. शुरू से बिल्कुल कमिटमेंट वाला पार्ट नहीं था. आई कैन सी मे बी आपका एनर्जी भी वॉज ऑल्सो लाइक दैट यू डोंट वांट टू गिव इन टू फुल into this connection, and you want to see, go with the flow, you want to see like if it's worth it, and then you're going to invest in. Maybe the other person used to think like that. तो कमिटमेंट वाला इनिशियली नहीं था, go with the flow वाला एनर्जी रहा है पास्ट रिलेशनशिप्स में. और जो मे बी जो आपका करेक्ट रिलेशनशिप है उसके पास में भी कैसा एनर्जी रहा है, कैसे स्टार्ट नहीं हुआ है. और ओवरऑल आई कैन सी स्टार्ट होने के बाद इट वाज रियली नाइस. इट वाज यू गाइस वर लाइकिंग ईच अदर एंड फुल ऑन एनर्जी ऑफ good connection in terms of compatibility, in terms of thought process. और ऐसा रहा है पास्ट में. और एनर्जीज ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी ही दिख रही है, being very honest. with 7 of Wands, अगेन 7 of Wands जो फूल के अकॉर्डिंगली वो कमिटमेंट वाला फैक्टर काफ़ी टाइम के बाद आया था. इट वॉज नॉट मतलब था या तो पास्ट रिलेशनशिप में था ही नहीं, और अगर है अभी तो वो काफ़ी टाइम के बाद रियलाइजेशन में आया था कि ट्रूली कमिटेड टू ईच अदर उस कनेक्शन से रिलेटेड. बाकी 7 of Wands एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो स्लोली करके वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ. इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इट वॉज लाइक इट इज़ राइट नाउ, या बहुत अच्छा जो बाद में हुआ या जो भी कनेक्शन था वो इनिशियली अच्छे टर्म्स पे स्टार्ट नहीं हुआ. अच्छा मतलब एज एन नॉट कमिटमेंट टर्म्स, बट येस वो धीरे धीरे करके उस लेवल तक बिल्ड हुआ, उस लेवल की एनर्जी आई. और एंड बोथ ऑफ यू गाइज गॉट कनेक्टेड रियली वेल, बोथ ऑफ यू गाइज फेल्ट रियली वेल अबाउट ईच अदर. और ओवरऑल इट कैन बी मतलब अगर रिलेशनशिप में आप नहीं हो अभी, बट पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी इस टर्म्स पे रहे हैं कि एट सम पॉइंट यू हैव फेल्ट दैट मे बी द अदर पर्सन इज द वन, और मे बी द अदर पर्सन इज द अदर हाफ. बेसिकली बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्शन दिख रहा है मेरे को. और पास्ट की एनर्जीज में मुझे कमिटमेंट के अलावा ऐसा कुछ इनिशियल फेजेस में कमिटमेंट के अलावा मुझे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग chaotic या कुछ ऐसा कुछ being very honest नहीं दिख रहा है. Let's move on to the present real quick. Let's check the energies. What is the in the present? What is happening, and what are the energies? Let's check क्या हो रहा है present में. ओके, प्रेजेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा तो नहीं लग रहा. ओके, ऑलराइट. ओके, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट की एनर्जीज भी मुझे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप. आई डोंट सी commitment issues. But as I said, initially it not started on good commitment kind of a zone, but now you guys are in the zone of full into commitment, and even thinking about a future together. Maybe even are already together in the zone of getting married or already married. तो एक stronger commitment के level पे present मुझे दिख रहा है. और अगर वो नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर है नहीं है एज ऑफ नाउ, बट वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इन दैट केस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड अगेन.
फोर ऑफ कप्स, आई थिंक फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ओवरऑल यही लग रही है. आई थिंक इट्स लाइक दिस. ओके. हाँ, अब लेट्स कम टू द रियल पॉइंट, जो कि है ये दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि द प्रॉब्लम्स, द केओस मे बी, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में चल रहा था प्रेजेंट की एनर्जीज में, इट्स नॉट रियली अबाउट द रिलेशनशिप रियली. ठीक है. एज आई सेड, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, योर गाइज आर कंपैटिबल, थिंग्स आर वर्किंग फाइन. और अगर आप सिंगल हो तो यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी कमिंग लाइक दैट. और ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ का जो ब्लॉकेज है, इट्स नॉट द पर्सन, इट्स नॉट रियली द रिलेशनशिप, इट्स रियली द your own self, your own overthinking and focusing so much on the things that are not there, instead of enjoying or appreciating or being grateful for the things that are already there. So the problem is inside you, it's not out there on surface, it's just in your head. तो जो भी chaos आपको लग रहा है रिलेशनशिप में है, या जो भी आपके माइंड में डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट है, दैट इज जस्ट बिकॉज it's in your head, it's not there out on a surface. Or maybe lack of communication, maybe you're not able to understand the other person, or the other person is not able to understand you. So basically कोई बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, it's just miscommunication, misunderstanding, and surface level पे ऐसी कोई बड़ी problem है ही नहीं. And in this case, what you need to do is you need to get things straight, you need to communicate, you need to have honest, mature communication with each other, try to understand each other's perspective, each other's expectations, and as partners you need to find mutual grounds to work around the problems. Because overall I think both of you are really committed and both of you want things to work out. So if the goal is basically same, that make things work out, then you should guys be open and be clear in terms of what exactly is happening and what needs to be done to fix that. So अगर आपका mindset instead of too much of emotional aggression, aggressive overthinking से अगर हट के practicality पे जाए, अगर वो उस सेंस पे जाए इन टर्म्स ऑफ एक्शंस की, क्या एक्शंस लिए जाएं, क्या करा जाए टू मेक थिंग्स वर्क आउट, अगर उस पर एनर्जी जाएगी तो इट विल बी ऑल राइट. Okay, let's move on to the future. What's coming next? I'm gonna pull out two cards from both the decks. Let's check that. Okay, two cards from both the decks. Justice, balance, Queen of Wands. I'm just telling you, the people who have chosen pile 2, problem कुछ है ही नहीं. ठीक है, सीधी सी बात है. आई कैन सी फ्यूचर में अगर आप एडवाइस फॉलो करते हैं, गाइडेंस फॉलो करते हैं, दैट इज टू कम्युनिकेट, दैट इज टू बी ऑनेस्ट, ओपन, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन's perspective, understanding each other's emotions and expectations, and follow through and work together as a team to make things work out. There will be balance, there will be good energies in terms of commitment, in terms of maybe further steps, stronger commitment, maybe engagement, maybe even marriage, okay, for that matter. Abhi, next, move on to the next two cards. I think, oh my god, everything in the future seems so beautiful, so romantic. अगर आप relationship में नहीं हो, you can expect things to move in a better, on a better side. Again,
एनर्जीज ओवरऑल यही है कि अगर आप जो गाइडेंस मैंने दी है वो फॉलो थ्रू करते हैं, इफ़ यू वर्क अराउंड योर ओन एनर्जीज, इफ़ यू वर्क अराउंड योर ओवर थिंकिंग एंड make your energies improve, you may expect someone who is going to come in your direction with a good relationship and kind of good compatibility. In terms of compatibility also, I can see that kind of a person is going to enter your life, and it would be a strong committed relationship. It would be a long term thing. It won't be a short term fling or anything like that if you're single. But yes, if you're in a relationship, you can expect stronger commitment, maybe even marriage. Okay, so let's move on to the next pile. You have chosen the rose quartz pile. Let's check, let's get into it. What is exactly the past? What has impacted you in certain way or anything like that? Anything that would give us an idea on the how things has been going and how it has impacted you and your life overall. Let's check that. Okay. All right. So I think previous relationship, previous experiences, may I can see there has been kind of like a immaturity. I think it was like a young love kind of energy. I don't see mature relationship. I think वो बहुत ज़्यादा से होता है ना young में निभा निभी वाला पूकी kind of a love, and it has been like a good experience, but it was not really on mature terms. It was really in terms of good lot of emotions and less in terms of practicality. And I think उसकी वजह से जब वो स्टार्ट हुआ इस इनिशियल इमेच्योर या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी से जब वो स्टार्ट हुआ, तब जब प्रैक्टिकलिटी आई, जब रियल लाइफ हिट हुई, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़र करी और देयर हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट और थॉट प्रोसेस जब प्रैक्टिकलिटी ने एंटर किया, जब रियल लाइफ हुई, तो वो चीज़ें मैच नहीं हुई और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन आई कैन सी द चैप्टर। थोड़ा सा ये चैप्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ, मूवमेंट दोनों की दिखी, दोनों के एक्सपीरियंसेस दिखे। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग द पीपल हु हैव चोजन दिस पाइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यंग थे जब वो रिलेशनशिप में आए, और जब इवन मिले, नॉट रिलेशनशिप, मिले एक दूसरे से, और यंग रिलेशनशिप दिख रही है मेरे को काफ़ी ना, मे बी टीनेजर, मे बी अर्ली 20s वाला रिलेशनशिप है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत कम सोचा गया, और जब प्रैक्टिकलिटी पे आई चीज़ें तो काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और अग्रीमेंट्स नहीं थी, तो कहीं ना कहीं दैट हैज़ बिन देयर, एंड दैट हैज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा मेरे को डिटैचमेंट लग रहा है उस चेंज की वजह से, उस ग्रोथ की वजह से, बिकॉज बोथ ऑफ यू were different when you guys met, and after a couple of years with maturity, with real life hitting, things are different now. So the different two individual are not really working things through, और compatibility पे भी बात आ रही है, because again अब दोनों के point of view different हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे, तो I can see the past is little bit एक phase में चला, like good, फिर दोनों की growth के साथ it went down because of the lack of compatibility कह लो, lack of मतलब thought process नहीं मिल रहा था बेसिकली वो maturity के साथ. Let's move on to present. What is exactly happening in the present, and how it is, the energies, how it's working out for you. Let's check the present for you. Okay. Alright. Present में I can see again. मेरे को ऐसा लग रहा है the person who's watching this video
who have chosen this pile, I think you want, like, you are kind of craving, or you want a stronger level of commitment. You want a good, efforts from your partner generally. Or if you're in a relationship, if you're not in a relationship, you are looking for a partner with this whole commitment kind of a thing, because you're fed up of immaturity, you're fed up of matlab way going with the flow kind of a relationship. So abhi you are really sticking to this point that mujhe commitment hi chahiye. I want strong committed relationship. You don't want to go into any fling anything like that. As per the present energy arcana, oh my god, this is the beautiful card. The Queen of Cups, again, as I said, is very nurturing, very caring. But in this case scenario, I feel that you are kind of in a zone that you have realized that you are done being caring, nurturing, and always giving. You want to receive the same level of warmth and nurturing and caring now. So at this point, there is a realization. There is also strong intent, energy in this direction. As I said, you want committed relationship, you want something bigger, something तो यूजुअली जो पार्टनर होता है, वो पार्टनर पार्टनर वाली जो फीलिंग है वो आपको चाहिए. इक्वल एफर्ट्स, इक्वल लव, इक्वल केयरिंग, इक्वल नर्चरिंग, वार्मथ फ्रॉम बोथ द एंड्स. तो दिस एनर्जी इज वेरी ब्यूटीफुल इन द प्रेजेंट इटसेल्फ. ठीक है, अभी के हिसाब से. बट अगेन, ओके, एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट गोना से, बट इट्स फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, अभी यू आर इन ट्रांजिशनिंग, आई कैन से कि अभी यू वांट दिस एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस एनर्जी. बट एट द सेम टाइम बीच बीच में योर हर्ट, योर पेनफुल एनर्जी, योर the experiences has kind of made it little difficult for you to move into this energy. So कभी कभी ये वाली एनर्जी आ रही है, कभी कभी ये वाली एनर्जी आ रही है कि नहीं हो रहा, कैसे होगा, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक अगेन, और मे बी इवन कहीं ना कहीं होप्स छोड़ देना, ऐसी वाली एनर्जी भी है. सो इट्स फ्लक्चुएटिंग एनर्जी प्रेजेंट में. एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगेन कहीं ना कहीं होप्स खोने वाली एनर्जी है प्रेजेंट में. एंड और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो कहीं ना कहीं यू आर स्कैर्ड कि अगेन किसी से मिलोगे तो फिर हार्ट ब्रेक होगा, या मतलब बेसिकली यू हैव क्रिएटेड वॉल्स अराउंड यू. दिस एनर्जी इज गुड, बट दिस हैड काइंड ऑफ मेड इट वेरी रिजिड फॉर यू. एंड वो वॉल्स क्रिएट हो गई इन दोनों एनर्जीज की वजह से. साइमल्टेनियसली दो एनर्जीज भी चल रही है, ऑल्टरनेटिवली भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से यू हैव क्रिएटेड अ वॉल अराउंड योर सेल्फ, जिसकी वजह से जो वॉल है तो आप अगेन यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग उस लेवल पे जाके कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो और जेन्युइनली पता चले द सामने वाला इज कंपैटिबल विद यू, सामने वाला वाली इज कंपैटिबल विद यू, और looking for the same kind of relationship and all that. So that is kind of limiting yourself. That kind of energy I can see in the present, surely. Let's move on to the future. What's going to happen next? Let's check that. Let's check what's going to happen next for you in terms of your love, relationship, and everything related to love, relationship. Okay, overall I think you're already going in the same direction, in the like good direction, sahi direction, right direction. That is as I said is कि you are transitioning, but आप completely उस energies को आने नहीं दे रहे, जैसे कि strong energies of getting what you want, not settling for the less thing. Let's check, let's pull out two other cards. Okay, Three of Wands. And you guys know one thing, both of these cards are basically the same. High Priestess, this is also High Priestess, this is High Priestess, and again High Priestess energy is at its peak. Matlab, whatever you're working right now, the High Priestess energy, the strong feminine energy with this strong sense of getting what you want, getting the worth,
proper self-worth, setting straight about your worth, and you're working around the energies and healing and all whatever you're working right now. I can see the result in the future. I can see you are completely in that zone and things are manifesting for you. Even like I cannot say that new relationship exactly, but yes, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप जो आप एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी से वो आएगा, या फिर जो करंट रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, बिकॉज यू आर रियली वर्किंग रियली रियली हार्ड in terms of your healing, in terms of you manifesting the good energy. You want to reflect the good energies in the outer world, and that is surely materializing in the future. I think it's very beautiful and very positive thing that you will be getting the results of your efforts and everything. So only guidance that I can tell you here is that you need to stay consistent with this energy. Don't get demotivated, or because of the, as I said, the जो present में चल रहा था कि hopelessness बीच बीच में आ रही है, उसको affect ना होने दे, उससे अपने आप को, अपनी energies को, and keep moving on. You will definitely reach where you exactly want to go, where you exactly you have set goals for yourself in terms of your relationship and what exactly you want. So I can see it materializing. So please, 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 please stay consistent with your current energies.